Hello students, this is Kashima Soni and now we are going to take up the next part in this particular topic, that is crystal field splitting in octahedral complexes. The next part is going to be crystal field stabilization energy. That is what we are going to talk about. That is what we are going to calculate. We are going to learn how we are going to calculate the CFSE in high spin and low spin octahedral complexes. So let's proceed further. Alright, so what we are going to see over here is your crystal field stabilization energy or crystal field splitting energy for various octahedral complexes. But you should know what is CFSE, right? So the amount of stabilization provided by splitting of the orbitals into two levels is called crystal field stabilization energy. ये आपकी जो टर्म है CFSE, कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर में, so you should remember what it is. It is the amount of stabilization provided by the splitting of d orbital into two levels, that is your Eg and T2g over here in octahedral complexes, is called crystal field stabilization energy. Correct. So let's see how we are going to calculate. Thus, in octahedral field, for each electron entering into T2g orbital, the crystal field stabilization is minus 4 dq. Okay, and for each of the electron entering into Eg orbital in the crystal field destabilization energy is plus c 6 plus 6 dq. Correct. Okay, so why destabilization energy for your Eg orbital is plus dq? Because those two orbitals are lesser stable as compared to the last three orbitals that is present in your T2g, that is your dxy, yz and xz. The reason being that particular orbitals, that is of Eg, that is your x square minus y square and dz square, they are present in the direction of incoming ligand, and it is resulting into greater repulsions, which is why your energy increases and stability decreases. So here comes the crystal field destabilization energy for Eg, that is plus 6 dq. Okay, so proceeding further, what we will see, let me first change the color of the pen. Okay, correct. So that is how you are going to calculate your CFSE, minus 4 dq, that is your electrons present multiplied by electrons present in your T2g level, plus 6 dq, the multiplied by electrons present in your Eg level. Correct. So this is how you are going to calculate your CFSE. You will eventually understand when we will take up some examples. Okay, so there comes some examples. Okay, first let's talk about D1 system, and one of the example metal ion example that we have taken is titanium 3 plus ion. Okay, so I'll just mention the orbital, that is T2g and Eg. The difference between them is going to be your delta O. Okay, okay, that I may have mentioned earlier only. So let's see. Okay, so as you can see, if one electron is present in Ti 3 plus ion, reason being it is having a orbital like this. Okay, something like this. So your Ti 3 plus, it is having configuration. Let me write it for you. Suppose your titanium is having electronic configuration. It is actually having electronic configuration argon, having 18 atomic number, and then we have 3d2, 4s, 2. Okay, this is the uh, electronic configuration of your titanium metal, and now we have been talking about titanium 3 plus. So 3 electrons will be removed, 2 from your s and 1 from your d orbital. So we are left with 1 electron in d orbital. So like that we can write. Okay, while splitting it in your octahedral complexes, that will show, we'll start the filling of electron from your lower level, that is your T2g. Correct. Okay, so that is first electron is filled in one orbital of your T2g. It may be dxy. Okay, something like this, xz. Okay, so this is how you are going to fill. Now when you are calculating CFSE, you have to multiply the number of electron present in your T2g multiplied by minus 4 dq, that we have discussed earlier only in the previous slide. Okay, so this is how you are going to calculate your CFSE in this particular case. Correct. So this much only it will come. Then in case of your D2 system, we have taken one example, vanadium 3 plus ion. Two electrons are present in the d orbital, and we have, after the splitting, the electron will first go in T2g, one in each. Okay, so one electron we have filled in two orbitals as per which rule?
as per your Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, that is one thing. I hope you remember that. So that is how now we are going to calculate CFSE, but we will multiply 2, that is 2 electron present in T2G orbital with minus 4 dq. Okay, and it will result in minus 6 dq. I hope you understand why we are multiplying it with minus 4 dq, because energy is lowered by minus 4 dq, correct, or 0.4 dq. Okay, that is one concept that we have discussed in previous slides only. Okay. Continuing further for D3 system, we'll see that is chromium 3 plus ion when we have having 3 electrons in d orbital. So how we are going to calculate? We are multiplying 3 electrons with minus 4 dq because it is present in the lower orbital, that is in your T2G orbital. So we are going to multiply it with minus 4 dq. Okay. Okay, there comes the main concept for D4 system. We'll discuss that properly in detail. Okay, so I want you to be more attentive while we are discussing D4 system particularly. Okay, so you can see, as I have mentioned over here, there are two possibilities in this case. Either all the electrons may occupy your T2G orbital only and making one electron getting paired. It is one electron over here. Okay, okay, so it will result in the electronic configuration T2G4. Okay, I guess I have not mentioned the electronic configuration in rest of the previous two cases. So let me do that for you first. Okay, for first case it is going to be T2G1. Second case it is going to be T2G2 because two electrons are present in T2G orbital. Third case it is going to be, okay, it is going to be T2G3 because three electrons are present in three T2G orbitals. Okay, so when we were discussing about D4 system, we have taken example of manganese 3 plus ion. There are two possibilities. All the 4 electrons either may occupy your T2G orbitals, making one electron getting paired, and it will result in the electronic configuration T2G4. Okay, and another possibility क्या है आपके पास कि तीन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं T2G ऑर्बिटल को और एक इलेक्ट्रॉन आपका प्रमोट हो रहा है EG ऑर्बिटल में, ठीक है. So it will result in this electronic configuration. देखिए कैसे कर सकते हैं आप, like that. So I hope you can understand. I have already filled the electrons over here. You can see that this is the case A. Okay. Oh, sorry. This is the case A and this is the case B. Okay. Proceeding further, discussing the same once again. What will happen? Okay. Okay. This is the first case, and I've already told you the difference between these two splitting or levels, that is going to be represented by crystal field splitting energy delta O over here. O for octahedral. So what is happening? The actual configuration is decided on the basis of your crystal field stabilization energy and pairing energy. And when we are talking about pairing energy, I would like to tell you that pairing energy आप कब calculate करते हो? Mostly in the cases of your low spin complexes only. Low spin complexes क्या होते हैं वो we are just about to discuss that in detail only. Okay, so pairing energy का concept आप सिर्फ और सिर्फ low energy complex low spin complexes में ही डिस्कस करोगे. एंड होता क्या है यहाँ पे, चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल. ओके, सो होगा क्या कि अगर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर पेयरिंग एनर्जी. पेयरिंग एनर्जी क्या है? पेयरिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर योर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, व्हाट इट इज? एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर योर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज योर पेयरिंग एनर्जी. अगर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो दैट इज द केस जहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स. और ऐसे कॉम्प्लेक्स में आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, इसीलिए आप इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे. समझे? कहा जब आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो वो आपकी कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स हैविंग लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड thus we can call it as low spin complex. Okay, I hope you should keep it that in your mind because that is very important concept. Okay, so proceeding further. Okay, let me just clean this slide first. Okay, proceeding further, this is the first case जहाँ आपका जब पेयरिंग हो रही थी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड आ गया, आपका NH3 आ गया, कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो उस केस में आपके कॉम्प्लेक्स में यू कैन शो पेयरिंग, करेक्ट. तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कॉम्प्लेक्स CO NH3 6 3, यहाँ तो मैंने 3 प्लस दिखा दिया. चलो मान लीजिए इस तरह से आपका कोई कॉम्प्लेक्स है Cl3.
तो अगर आपको सबसे पहला काम क्या आप करेगा, आप कॉम्प्लेक्स में अपने मेटल एटम की, सेंट्रल मेटल एटम की क्या करेंगे, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेक कर ली, फिर आपने उसका नॉर्मल जो उसका एटॉमिक नंबर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेनी है। वहां से आपने एज पर मान लीजिए कि कोबाल्ट की 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, यू विल सी विच काइंड ऑफ डी सिस्टम इज दिस, और अकॉर्डिंगली आप आगे प्रोसीड करेंगे। करेक्ट। So that is one case over here, the case of your strong field complex. अब चलेंगे आगे। दिस इज द केस जब आपकी जो पेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पेयरिंग नहीं हो रही है, आपके T2G के अलावा आपका जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो EG में चला जाएगा, तो उस केस में क्या बोल सकते हैं आप, ऐसा केस कब होगा, दिस इज द केस ऑफ योर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जब आपकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से, और दैट इज द केस ऑफ योर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, दैट इज another important concept to be remembered. ओके, तो अब देखिए क्या होगा। अब इसे जनरलाइज कर लेते हैं हम एक बार कि अगर आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग से, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। वहीं अगर इसका रिवर्स है तो आपके पास वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, सो जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड। Okay, so proceeding further, that is your D4 system, and this is for your this one where your pairing occurs, that is your low spin complex that I have just discussed in the previous slide. Low spin complex, and this one is your high spin complex. HSP stands for high spin complex. Okay, so in D4 how we are going to calculate, these are four, there are 4 electrons present in your T2G orbital, so this is going to be your electronic configuration for this, and however अगर आप यहाँ पे pairing energy calculate करते हो तो आपकी net CFSE बन जाएगी -16 dq plus p। अब आप बोलोगे ये यहाँ p कैसे आ गया, तो देखिए होगा क्या, let's see over here what will happen। तो देखिए आप पेयरिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट फाइंड इट इन एनी पर्टिकुलर बुक, सो देख लो समझ लो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करिए, सबसे पहले लो स्पिन के लिए ड्रॉ कर लीजिए, जो कि हमने किया ही है यहाँ पे। तो लो स्पिन में आपके पास कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड है, तो 1 लिख लीजिए। यू सब्सट्रैक्टेड विद द 1 प्रेजेंट इन योर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, कितने पेयर्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, एक भी नहीं, एक भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, तो राइट इट ओवर है -0। ओके, वहां पे कितना था, एक था, यहाँ पे एक भी नहीं है हाई स्पिन में। सो दिस इज द केस, आपके पास पेयरिंग एनर्जी आ गई 1, सो दैट इज आई वी हैव मेंशन 1 p की जगह हमने p ही मेंशन कर दिया है, दैट इज इट अबाउट इट। ओके, correct, so that is how you are going to calculate your pairing energy. I have mentioned p only in place of 1 p. Okay, so yes, and another concept is pairing energy you are going to calculate in low spin complexes only, correct, and this is the case where your one electron gets promoted to EG orbital. What will happen, how you will calculate CFSE, see 3 electrons are present in T2G, so you can multiply 3 with -4 dq, and 1 is present in EG, so you can multiply +6 with 1 electron. Okay, so this will result in total -6 dq, करेक्ट। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि कैलकुलेट CFSE फॉर D4 सिस्टम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर पर्टिकुलरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऐसे आपसे टर्म यूज कर लेंगे, या फिर आपके पास टर्म यूज कर लेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इस तरह की टर्म्स यूज कर सकते हैं आपके पास। सो यू हैव टू बी अवेयर, दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। सो D4 के लिए हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, आई विल नॉट बी रिपीटिंग दैट अगेन। Let's talk about D6 weak field ligand. I have made it both. I have made strong field as well as weak field, both of these। तो हमसे पूछा गया है weak field के लिए, so this is going to be your answer। क्या होगा weak field में, आपके पास सबसे पहले pairing नहीं होगी, pairing आपके पास नहीं होगी यहाँ पे, योर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन इज लेसर एज कम्पेयर टू पेयरिंग, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग बाद में होगी, ठीक है, रिमेंबर दैट, उल्टा चलता है, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी जरूर ज्यादा है लेकिन पेयरिंग आपकी यहाँ पे बाद में होगी, ठीक है। फर्स्ट यू विल ट्राई टू फिल अप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 5 ऑर्बिटल्स T2G देन पेयरिंग शुरू करोगे आप। तो उसके अकॉर्डिंग आप CFSE कैलकुलेट कर लेंगे। CFSE इज गोइंग टू बी लाइक 4 electron present in T2G, 4 multiplied by -4, 2 present in your EG plus 2 multiplied by 6. Okay, so this is going to be your answer. Okay, so I hope you have understand, this is for your D7 system। strong field के लिए पूछा है, मैंने दोनों ही ड्रॉ कर दिए हैं, so that आपके लिए ईज रहे, आप एक बार समझ लें इसको आसानी से, और उसके बाद आपको इजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। so this is how you are going to calculate for your strong field complex for your D7 system। okay,
So this is your overall chart for your crystal field stabilization energies for metal ions having different numbers in your octahedral complexes. Go through